Welcome to Jannat Learning's digital class. This video is for the Virtual University course Introduction to Computing, CS101 topic 229 MS Access, Query Wizard. The additional topic is Import Data into Access Tables. We hope this is informative and helpful. Please subscribe to Jannat Learning if you haven't already. Your suggestions and comments are welcome. Click External Data. Then Excel, as you can see in the video. Click the Browse button and choose the folder and select the folder and file. Then select the worksheet from the tab. Select the required columns and data type or skip, and type the field name for the table. And finally, type the table name for access. If the table name already exists, you will find an alert window. Import from text file. Click External Data, then Text File. As shown below, image. Click External Data. Then Excel, as you can see in the image below. Click the Browse button and choose the folder and select the folder and file. Select the second option, append a copy of the records to the table. Choose the option based on the file, a delimited character such as a comma or tab separator. We have used a semicolon as a separator, therefore we will select this. MS Access automatically selects semicolons, otherwise, we have to select them manually. Finally, all data will be imported into a table. जी हमारे पास हमने डाटा इंपोर्ट किया है, सैंपल डाटा चेक करने के लिए। एम्प्लॉयज़ देखें, उसका टेबल स्ट्रक्चर ये है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी। इस तरह जॉब का भी हमने लिया है। जॉब आईडी है, जॉब टाइटल है, मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम और डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन आईडी। डिपार्टमेंट आईडी जो है यहाँ पर इसका यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पर यह है। और इसी तरह जॉब आईडी भी यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके क्यूरी में इसको यूटिलाइज करके देखते हैं। तो सबसे इससे डाटा भी हमारे पास मौजूद है। डाटा को देखते हैं कि डाटा हमारे पास क्या है। ये डाटा है, सारा एम्प्लॉयज़ का डाटा है। और इसके अंदर ये जॉब आईडी 459999 और डिपार्टमेंट आईडी भी, ये सारा उसके अंदर फीड हुआ हुआ है जॉब्स के अंदर। ये है हमारे पास डिफरेंट जॉब की आईडी 1 2 3 4 19 जॉब आईडीज़ हैं। पब्लिक अकाउंट्स मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, प्रेसिडेंट, ये सब मौजूद हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट्स के अंदर भी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, परचेजिंग, उनके ये कोड है। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूरी लगा के देखते हैं। क्यूरी
Selecting data from multiple tables. Suppose that you want to select the first name, last name, and department name of every employee. First name and last name are in the employees table, and department name is in the departments table. Both tables have department ID. You can use the query in such a query is called a join. Structured Query Language, SQL, pronounced SQL, is the set-based, high-level computer language with which all programs and users access data in Microsoft Access. SQL is a declarative, or non-procedural, language. That is, it describes what to do, but not how. You specify the desired result set, for example, the names of current employees, but not how to get it. About the insert statement. The insert statement inserts rows into an existing table. The simplest recommended form of the insert statement has this syntax: insert into table name, list of columns, values, list of values. Every column in list of columns must have a valid value in the corresponding position in list of values. Therefore, before you insert a row into a table, you must know what columns the table has and what their valid values are. The update statement updates, changes the values of a set of existing table rows. A simple form of the update statement has this syntax: update table name set column name equals value, column name equals value, where condition, each value must be valid for its column name. If you include the where clause, the statement updates column values only in rows that satisfy condition. The delete statement deletes rows from a table. A simple form of the delete statement has this syntax: delete from table name, where condition. If you include the where clause, the statement deletes only rows that satisfy condition. If you omit the where clause, the statement deletes all rows from the table, but the empty table still exists. To delete a table, use the drop table statement. जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में शिरकत का शुक्रिया। हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और आज के लिए जामे हल, मददगार वसाइल और माहिराना रहनुमाई फराहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स के जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हूँ। आइए मिलकर तालीमी जिद्दत की दुनिया को फतह करें। बाकायदा अपडेट्स और कीमती इंसाइट के लिए जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें।